हेलो फ्रेंड्स मु अजित स्वागत करुँ समस्त को स्टडी तो अजित यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स आम आज स्टार्ट करुचे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एक्सप्रेस क्लास सीरीज। तो एक्सप्रेस क्लास सीरीज ये रही फर्स्ट वीडियो जो थी कि आपण मान सहित मुझे 20 इंपोर्टाट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी। तेज जदि आपण मैंने भाव में वीडियो पाइबा चाहती रेगुलारली भाव में डेफिनेटली भाव में सब्सक्राइब करूँ स्टडी तो अजित यूट्यूब चैनल को एवं प्रिपेयर हूँ अपकमिंग टीचिंग एग्जाम से OTET हो OSTET हो OAVS CHT हो। तो जेकोसी टीचिंग एग्जाम आप प्रिपेयर होगा चाहते तो डेफिनेटली भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके रखी था। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा आम। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन सहित मु आंसर आपको मेंशन कर जहाँद्वारा कि आपंकर कौन प्रॉब्लम हेनी उत्तर करिवारे। सो फर्स्ट क्वेश्चन थिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुइटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। सो चिल्ड्रेन मानकर इमोशनल डेवलपमेंट को सुइट पाई केउटी गोटे उपयुक्त माध्यम हेबो। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर आज इट इज द टास्क ऑफ द पेरेंट्स। कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। ओके देन नंबर डी ऑथराइजेशन क्लास एनवायरनमेंट। सो राइट आंसर आपनकर रही ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए कहला कौन ना डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। ओके सो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट रहिबा द्वारा तो प्रत्येक पिला माने निज भितर थिबा जो अंतर्निहित गुण गुड़िक रहिला बा जो ताकर इंटरनल फीलिंग्स गुडा रहिला ताकू से माने इजीली शेयर करि परिबे जादुरा कि समानकर इमोशनल डेवलपमेंट घटी परिबो। ओके मूव करिया परवर्ती प्रश्न उपर को। परवर्ती प्रश्न Which one of the following is not a suitable formative assessment task। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क रो गोटे माध्यम नुहे। ओके नेक्स्ट फर्स्ट दला आपनकर ऑप्शन ए ओपन माइंडेड क्वेश्चन। ऑप्शन बी प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन डी दला आपनकर रैंकिंग द स्टूडेंट्स। ओके सो राइट आंसर ही जिबा आपनकर ऑप्शन डी दैट इज रैंकिंग द स्टूडेंट। ओके तो जितेबाला आम गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट कथा कहूचे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आम केतेबेले करंती ना पिलार जदि कोनोसीटी प्रॉब्लम रहिला टीचिंग बेले बा बुझीबार अंडरस्टैंडिंग रे प्रॉब्लम रहिला ताले जो आपनकर रिमेडियल क्लास रही तो ताकू करबा पय आम फॉर्मेटिव असेसमेंट करिथाउ। ते फॉर्मेटिव असेसमेंट पय जदि आपण ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारुचंती ताले ता मध्ये ठीक अछि पिलार दक्षता बा तार एबिलिटी जानी हबो। देन प्रोजेक्ट द्वारा ऑब्जर्वेशन द्वारा मध्ये करा जाय परिबो बट जो रैंकिंग रहिला रैंकिंग द्वारा करा जाय परिबो नाही बा रैंकिंग करबाटा उपयुक्त नुहे। जिबा क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर को। क्वेश्चन 3 ऑन योर स्क्रीन। To be an effective teacher it is important to ऑप्शन ए। ओके ठीक है जूम कर देखा को इजी हम। ओके क्वेश्चन 3 कौन कहला ना गोटे इफेक्टिव टीचर हवापाई कौन मुख्य आवश्यक अटे। ऑप्शन ए एम्फासाइज डिटेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम द बुक। ऑप्शन बी फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन ग्रुप एक्टिविटी। ऑप्शन सी अवॉइड डिस्क्रप्शन कॉज्ड ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। ऑप्शन डी बी इन टच विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड। सो राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन कहूँ ऑप्शन डी रही आपनकर बी इन टच विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड। ओके सो गोटे इफेक्टिव टीचर सेतेबेले गुरुत्वपूर्ण हो जेतेबेले जेतेबेले जे शिक्षक जनक प्रत्येक पिला सहित कंटाक्ट थिबे ताको टच रे थिबे ताहाले ही गोटे इफेक्टिव टीचर तांकर शिक्षाटा मध्ये फलप्रद हो परिबो। देन आसिया क्वेश्चन 4 ऊपर को। क्वेश्चन 4 रहिला आपनकर टीचर नीड टू क्रिएट गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग टू क्रिएट सच ए लर्निंग एनवायरनमेंट व्हिच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके सो गोटे टीचर कौन करे ना गोटे टीचर गोटे गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करे कौथि टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग। ओके तो एभले भाव में क्रिएट करिया लर्निंग एनवायरनमेंट तो निम्नलिखित मध्यरु केउ उक्तिटी सत्य नुहे। ऑप्शन ए अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स एफर्ट। ऑप्शन बी कंप्लेंट्स विथ टीचर। ऑप्शन सी एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन डी पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर। सो एटी राइट आंसर आपनकर कहूँ कौन रहिबो ना कंप्लेंट्स विथ टीचर्स। ओके सो ये है आपनकर सठिक उत्तर। जे परवर्ती क्वेश्चन ऊपर को। परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। ओके गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स according to you which one of these is true। option A boys should help in activity outside the home। option B boys should help in household chores। option C all boys should be taught science and girls and home science। option D girls should help in the household chores। so right answer is option B
boys should help in household chores. Okay, then asiba option next question 6 upar ko asiba ame question 6 on your screen. A child's notebook shows errors in writing like a reverse image, mirror image, etc. Such a child is showing sign of. तो गोटे चाइल्ड नोटबुक रे देखा गला जे जो राइटिंग रही तार एरर देखा गला जेपरी रिवर्स इमेज रे मिरर इमेज रे ताले चाइल्ड केउ लक्षणटी एठी प्रकाश पाउची. ऑप्शन ए लर्निंग डिसएडवांटेज, ऑप्शन बी लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी लर्निंग डिफिकल्टी, ऑप्शन डी लर्निंग प्रॉब्लम्स. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी. ओके एटा है आपनकर सटीक उत्तर. देन आसिया क्वेश्चन नंबर 7. Teachers in order to help learners construct knowledge need to focus on. Option A making sure the learner memorize everything, option B scores mark obtained by the learner, option C involving the learner for active participation, option D mastering learning up concept by the learner. तो राइट आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कौन कहूँ इनवॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन. देन आसिया क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर को. क्वेश्चन 8 ऑन योर स्क्रीन. गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ए हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, ऑप्शन बी हाई मोटिवेशन, हाई कमिटमेंट, हाई टैलेंट, ऑप्शन सी हाई एबिलिटी, हाई टैलेंट, हाई कमिटमेंट, ऑप्शन डी हाई टैलेंट, हाई क्रिएटिविटी, हाई मेमोरी. तो राइट आंसर है हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट. Move to the next question, question number 9. According to NCF 2005, errors are important because they NCF 2005 ऑलरेडी दुईटा थियोरी वीडियो आपण मानको प्रोवाइड करा जाय चैनल रे. आपण मान चाहिले चैनल को व्यू करके मते देखि परिबे एवं प्लेलिस्ट मध्ये आपण देखि परिबे NCF 2005 रो. ओके तो सब प्रकार जो शिक्षा नीति रही ताको नै गोटे वर्तमान उपरे आपण मानको खूब शीघ्र चैनल रे मिलिबो सेथिरे. तो शुरुआत रु आरंभ रु आपणकर वर्तमान पर्यंत जिते प्रकार शिक्षा नीति थिला सेथिरे कोन कोन इंपोर्टेंस थिला, कोन कोन ड्रॉबैक्स थिला, सब गुडी को नै कि आगामी किछि दिन मध्ये आपण मानको गोटे प्लेलिस्ट चैनल रे मिलिबो जेथिरे सब एनसीएफ रो आपण मानको वीडियो सेठी मिलिबो. तो आपण माने 20 यूर के चैनल सब्सक्राइब करिथांते एवं माने आपण मान जदि चैनल को सब्सक्राइब करके रखुचंती ता द्वारा कि आपण मानको केबे वीडियो आसले ता नोटिफिकेशन आपण पाख को आसी जिवो. ओके मूव करिया क्वेश्चन ऊपर को. तो एनसीएफ 2005 रे एरर गुडी को गुरुत्वपूर्ण काहे कि ना. ऑप्शन ए आर एन इंपोर्टेंट टूल इन क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ पास्ट एंड फेल्ड, प्रोवाइड ए वे टू द टीचर टू स्कॉल्ड द चिल्ड्रेन, provide an insight into the child's thinking and help to identify solutions, provide space for removing some children from the class. So right answer एठी हे जो आपनकर provide an insight into the child's thinking and help to identify solution, that is option C. Okay, so here option C is the right answer. Move to the next question. Out of the box thinking related to. Okay, out of the box thinking related to option A consistent thinking, option B memory based thinking, option C divergent thinking, option D convergent thinking. तो राइट आंसर है जो आपनकर एटी divergent thinking. ओके मूव करा परवर्ती प्रश्न ऊपर को. परवर्ती प्रश्न नंबर 10 आपनकर 11 नंबर क्वेश्चन. 11 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची. The assessment of student can be used by teachers in teaching to develop insight into. Option A identifying the student who need to be promoted to the higher class, not promoting those students who do not meet school standards, changing the teaching approach according to learners need, creating group of bright and weak student in the class. So right answer is option C, that is changing the teaching approach according to learners need. Then question number 12. Okay, on your screen. Learning experience should be planned in a manner so as to make learning meaningful. Which of the given learning experience does not facilitate meaningful learning for the children? Option A repetition based on mere recall of content, formulating questions on content, discussion and debate on the topic, presentation on the topic. So right answer है जो आपनकर एटी right answer होची option A, that is repetition based on the mere recall of the content. Move to the question number 13. So it is very important question according to your recent exams. Giving punishment
verbal or non-verbal to the children result in option A motivating them to work, protecting the child's image, option C improving their scores, damaging their self concept. So right answer is what if we punish a child, it may be in the form of verbal or non-verbal, that doesn't matter, the result is damaging their self concept. Okay, move to the next question. Which one out of the following provide information about the rules and behaviors which are acceptable in a group during early childhood period? Okay, so option A sibling and teachers, teachers and peers, peers and parents, parents and siblings. So the right answer is option D, that is parents and siblings. Okay, so what it actually means? So it means that the role and behavior that are acceptable in a group, okay, in a early childhood period. So as we know, in the early childhood period, their parents are their friends, right? So the relation between behavioral relations between parents and siblings are most important. Then question number 15, making students members of a cleanliness community to motivate them for the same reflects option A socio-cultural conception of motivation, behavioristic approach to motivation, humanistic approach to motivation, cognitive approach to motivation. The right answer is option A, that is option A socio-cultural conception of motivation. Which of the following age group fall under later childhood category? Okay, option A 11 to 18 years, option B 18 to 24 years, birth to 6 year, 6 to 11 year. Okay, later childhood category, it is option number D, 6 to 11 year. Okay, then question number 17, Ajit says that language development is influenced by one's innate predisposition, while Sonali feels that it is because of the environment. This discussion between Arjab and Sonali is about, okay, so here is a situation. In this situation, what has been given to us, that is Arjab says something and Sonali feels something. Okay, so according to this question, Arjab says language development is influenced by one's innate predisposition. Okay, so it is a meaningful sentence, and the Sonali feels it is because of environment. So the question has given to us, that is we have to choose among these options, that the discussion that has been held between Arjab and Sonali. Option A critical and sensitive feeling, option B stability and instability argument, continuous and discontinuous learning, nature and nature debate. Okay, so the right answer is option D, that is nature and nature debate. Then question number 18, the teacher noticed that Puspa cannot solve a problem on her own, however she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called, so here Puspa, okay, we have to answer, okay, option A lateralization, option B pre-operational thinking, option C zone of proximal development, option D scaffolding. So right answer is very easy, that is scaffolding. We have discussed this type of question in the previous series also. Okay, scaffolding. Next question number 19, a teacher labeled the head of the committee as chairperson instead of chairman. It indicates that the teacher, option A follow a more acceptable term, has a good command of language, is using a gender free language, has a gender bias. Yes, it is the right answer, that is as a gender bias. Okay, next question number 20,
continuous and comprehensive evaluation is essential for option A, fine tuning of test with the teaching, diluting the accountability of the board of education, correcting less frequent errors more than more frequent errors, understanding how learning can be observed, recorded and improved upon. The right answer is option D, that is understanding how learning can be observed and recorded and improved upon. Okay, so next is a bonus question for you guys. Question number 21. In Lawrence Kohlberg's theory, which level signifies the absence of morality in the true sense? Okay, option A level 3, option B level 4, option C level 1, option D level 2. The right answer is option C, that is level 1. Okay, level 1 is your right answer. So friends, ये थिला ए सीरीज रो 20 क्वेश्चंस. तो एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन आपण मन को एठी दिया गला गोटे क्वेश्चन. सो डेफिनेटली भाव एठी 21 क्वेश्चन हम डिस्कशन कले. तो आसुथिबा आगामी एग्जाम गुडी करे डेफिनेटली भाव रे तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो कोनोसी भी प्रॉब्लम आपण मान क्षेत्र देखिया को मिलिबो नाही. जेपरि कि पूर्व जते बेले हमर CHT एग्जाम थिला सेटरे एथिरु बहुत गुडे पिला कर प्रॉब्लम हेथिला एवं सेहित पई मे भी केते गुडी कर कट ऑफ रे बहुत कम आसला. मु डायरेक्ट मीट कर से पीपल मान सहित. ओके, केते गुडी से मो फ्रेंड्स मान मध्य से इनक्लूड थिले. ओके सो ये थिला आपण मान पई बचा बचा केतोटी प्रश्न. आई होप आपण समस्त को वीडियो पसंद लागि थिबो. यदि वीडियो पसंद लागे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करिवे. चैनल को प्रथम थर आस्थिले चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली भाबरे करिवे. सो पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे आगामी दिन रे दियंती विदा. दिस इज अजित दास साइनिंग ऑफ.